CNBC-TV18 presents the Genesis Gujarat. Hello and welcome to CNBC-TV18 presents the Genesis Gujarat in association with the Chiripal Group. I'm your host Gautam Srinivasan, and today we are here to chronicle the incredible journey of the Chiripal Group from its humble beginnings to becoming a powerhouse company with varied interest in various industries spreading all across the world. This has become a prominent, diversified conglomerate in India, and the name just keeps expanding. And today, we'll be speaking with the first generation of leaders and the second generation of leaders, because this company, this brand is not just built on its legacy, but it's also actively shaping industries both in India and across the world. So in this first segment, we will understand the legacy aspect and speak to the founders of this legacy. Let me quickly introduce our guests to you in this first segment, starting with Ved Prakash Chiripal, chairman of the Chiripal Group. He joins us, and along with him, we have with us Jyoti Prasad Chiripal, managing director of Nandan Denim Limited. Also with us is Jay Prakash Chiripal, director of Chiripal Polyfilms. And finally, we have with us Brij Mohan Chiripal, director of Grew Energy Private Limited. Gentlemen, thank you so much for joining us, and I'm looking forward to understanding the legacy on which this brand has been built. तो उसी नोट पर शुरुआत करते हैं. वेद प्रकाश जी, we'll start with you because you have evolved this company to such great heights. But हर कहानी की एक शुरुआत होती है. So the vision and mission of the Chiripal Group. Let's start with that. What would you have to say? पहले दिन जैसे ही मैंने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, हम सब परिवार वाले अहमदाबाद में आ गए. जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया, भाई लोग हमारे साथ ज्वाइंट होने गया. पहले दिन से मैं ये सोचता हूँ, कोई भी मिशन करने के लिए जहाँ अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, पहले अपने को सोचना चाहिए. सोचने के साथ हमें कार्य करते हैं. कार्य के साथ रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए. रिजल्ट अच्छा ही ऊपर छोड़ देना चाहिए. चलिए, इसमें गीता सार भी आ गया. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता न कर. ऑल राइट, जयप्रकाश जी, आपका क्या कहना है इसमें? व्हाट वुड यू हैव टू से ऑन द विजन एंड मिशन? जिस तरीके से जो कंपनी बढ़ी है और इतने सारे ग्रुप कंपनीज अब आ गए हैं, आपका विजन और मिशन क्या था इसमें? भी विजन और मिशन बिल्कुल क्लियर था कि हमें ग्रोथ करनी है और हर सेक्टर में ग्रोथ करनी है. लेकिन उस टाइम पे जब नए नए वेद प्रकाश जी आए, हम लोग आए, तो हमें ज़्यादा बड़ी ग्रोथ के बारे में, ज़्यादा बड़े नंबरों के बारे में, ज़्यादा बड़ा विजन के बारे में इतनी सब नॉलेज नहीं थी. लेकिन जैसे जैसे हम अपने तरीके से ग्रो करते चले गए, तो हम अपना ग्रोथ पॉइंट बनाते गए, विजन बनाते गए, टारगेट नक्की करते गए. इस तरीके से हमको आगे बढ़ने का है और उसी तरीके से आगे बढ़े. मेरे को अभी एक टाइम की बात याद आ रही है कि मैं किसी ज़माने में 90s की बात है, मैं कोई POY का बड़ा प्लांट देखने के लिए गया था. और वो बड़ा प्लांट इतना बड़ा प्लांट था कि मैं सोच नहीं सकता था. लेकिन फॉर्चुनेटली मैं उस प्लांट के अंदर गया तो लोगों ने टाई लगा रखी है, प्रोफेशनल कल्चर है, चेयरमैन आते नहीं है, और हमारे प्रोसेसिंग हाउस के अंदर सुबह शाम हम बिल्कुल लेबोरियस काम करते रहते हैं. तो मैंने वेद प्रकाश जी को बोला, क्यों ना हम ऐसा कुछ कामकाज करें. तो फिर मैंने उनको बोला इसके अंदर तो इन्वेस्टमेंट बड़ी है. तो उन्होंने मेरे को समझाया, देखो अगर आपको बड़ा काम करना है तो इन्वेस्टमेंट पैसा छोटी चीज़ है, हिम्मत बड़ी चीज़ है. आप इसके ऊपर आगे बढ़ो, यू डोंट वरी अबाउट द मनी. पैसा देने वालों की लाइन लगी हुई है. तो वेद प्रकाश जी के इस स्टेटमेंट ने मेरे अंदर वो प्रोजेक्ट करने की जान डाल दी. ये और तो मतलब किसी बॉलीवुड फिल्म का दैट इज ट्रू. और हमने जो है, पहले हम 2, 5, 7, 10 करोड़ का प्लांट लगाते थे, वो हमने लगभग 70-75 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा दिया वेद प्रकाश जी की स्टेटमेंट के ऊपर कि भी हिम्मत चाहिए प्लांट लगाने के लिए, पैसा नहीं. पैसा सेकेंडरी है, पहले हिम्मत चाहिए. और हमने वो प्रोजेक्ट लगाया. लगाने के बाद में हमने उससे बहुत कुछ सीखा. प्रोफेशनल कल्चर सीखा, मीटिंगें करनी सीखी, मतलब कॉरपोरेट क्या होता है उसके बारे में हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला. और फिर उससे जो है हमने अपने ग्रोथ का सिलसिला चालू किया.
Well, they call it strength in purpose. Let's understand what's the driving philosophy, though, behind the expansion into various industries, because there is textiles, there is packaging, there is renewable energy, and many other. I think even education is there. So lots of industries there. I'm going to ask a question to Jyoti Prasad ji on the driving philosophy for this growth that we have seen in the brand across various industries. ज्योति प्रसाद जी, आपका क्या कहना है इस पर? स्टार्टिंग में जैसे वेद प्रकाश जी ने बताया 72 में हम लोग सब यहाँ आ गए। आने के बाद फिर पहले तो आड़त का काम करते थे, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। तो मैन्युफैक्चरिंग में आ गए तो ये रहा भाई आपको धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है। पहले हम वीविंग में थे, फिर धीरे धीरे हम लोग प्रोसेसिंग में आ गए, कपड़े का प्रोसेसिंग, और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसा आ गया हमने काफ़ी प्रोसेसिंग का बढ़ा दिया, जिसमें कपड़ा हम बाहर से लेते थे, प्रोसेस करके बेचते थे। तो धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में माल बेचते थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, जैसे जयप्रकाश जी ने बताया, हमने पीओआई इंडस्ट्री के अंदर 95 में चालू किया। तो वहाँ से फिर हमारा समझो कॉरपोरेट और प्रोफेशनल काम का चालू हो गया, क्योंकि उस इंडस्ट्री के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। हमने प्रोफेशनल आदमी रखे और उससे हमने प्रोफेशनल ढंग से चलाया। तो वहाँ से फिर हमें मालूम पड़ा भी किस तरह से प्रोफेशनल काम काज करते हैं। और फिर उसके बाद हमने 2004 में नंदन डेनियम की शुरुआत की। फिर उसके बाद हमने नंदन डेनियम चालू किया। 20 लाख मिलियन से शुरू होके 110 मिलियन टन तक का प्रोडक्शन हम ले गए। और एक टाइम ऐसा था हम इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में डेनियम में आ गए। तो धीरे धीरे नंदन से हमने फिर बाद में हम पॉलीफिल्म में आए और दूसरे स्कूल में आए, और धीरे धीरे हम बढ़ाते चले गए। शुरू में हमारा 10 साल पहले तक ये था विजन, भाई हमें अहमदाबाद से बाहर नहीं जाना है। लेकिन 10 साल से फिर हमने सोचा भी खाली एक सिटी में ना करके ऑल ओवर इंडिया में काम बढ़ावे। फिर हमने दूसरी सिटी में भी, जैसे हैदराबाद में काम चालू किया, जयपुर में चालू किया, अभी जम्मू में भी कर रहे हैं। Well, there is strength in unity, from strength in purpose to strength in unity. ब्रिजमोहन जी, आपका क्या कहना है? Because you are part of a very exciting business, renewable energy. पर ये जो ड्राइविंग फिलोसफी की बात हो रही है, the expansion across industries, आपका क्या कहना है? कि वेद प्रकाश जी ने काम स्टार्ट किया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या रही कि वो हर काम डेडिकेट करते थे। कई जॉइंट फैमिली में एक एल्डर लोग होते हैं, वो ज़्यादातर खुद अपने हाथ में पावर रखते हैं। इन्होंने शुरू से लेके आज तक उन्होंने हर चीज़ छोटों को देते गए। कभी हम मीटिंग में कहीं किसी साथ बैठे होते और वेद प्रकाश जी तारीफ करते भी, आप इतना अच्छा ग्रोथ कर लिया, तो एक ही बात कहते थे, बोला मैंने कोई ग्रोथ नहीं की, ये मेरे छोटे भाइयों ने की है। इनकी प्रोग्रेस, इनकी ग्रोथ, डे नाइट मेहनत करके हमारा ग्रुप काफ़ी आगे आया। उससे हर फैमिली मेम्बर को मोटिवेशन मिलता था। 2004 में हमने डेनिम का प्लांट चालू किया। फिर वेद प्रकाश जी का विजन अभी जो देश को चाहिए थोड़ा हमको वो देना चाहिए। तो 2010 में उनको लगा भी एजुकेशन की अच्छे एजुकेशन शॉर्टेज है, तो उन्होंने मेरे को कहा ब्रिजमोहन अपने को थोड़ा एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम करना चाहिए ताकि लोगों को हम पढ़ाई लिखाई दे सके। तो उन्होंने मेरे को एक काम सौंपा गया कि भैया तुम एजुकेशन का कामकाज देखो। फिर हमने अहमदाबाद में स्कूल स्टार्ट किया। आज के तारीख में 10,000 बच्चे हमारे बड़े स्कूलों में और 10,000 के जूनियर स्कूल चलते, शांति जूनियर स्कूल, उसमें हम पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। फिर उसके बाद डेनिम का प्लांट चला, पैकेजिंग चला। अभी लेटेस्ट मोदी जी ने एक स्कीम निकाली थी पीएलआई की, एनर्जी के बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो पीएलआई में 12 कंपनियों को मिला था, उसमें एक हम भी थे। उसके बाद हमको मोटिवेशन मिला कि हमको ग्रीन एनर्जी में जाना चाहिए। तो हमने लास्ट ईयर जयपुर के पास दूदू जगह है, वहाँ पर हमने एक प्लांट हमारा डाला गया, जो लास्ट दिसंबर में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। और इस दिसंबर में हमारा 2.8 गीगावाट का हमारा मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल का हमने डाल दिया। All right, let's talk about some of the key businesses which are there in this group, and Nandan Denim is a prominent brand within this umbrella. So let's talk more about how they tapped into the market opportunity. Jyoti Prasad ji, आपका पहला viewpoint on this opportunity when we look at Nandan Denim, what would you have to say? नंदन डेनियम के अंदर हमने 2004 में चालू किया। उसके बारे में हम 5 साल पहले से सोच रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी हम टेक्सटाइल में तो थे ही। टेक्सटाइल में प्रोसेसिंग, वीविंग तो हम कर ही रहे थे। तो हमने सोचा एक डेनियम इंडस्ट्री भी आगे फ्यूचर अच्छा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमने 2000 में सोचना चालू किया और 2004 में प्रोडक्शन चालू किया इसका। और 2004 में चालू किया तो उसमें 20 मिलियन
टन ईयरली चालू किया था और बाद में 110 मिलियन टन तक हम ले गए इसको। इंडिया का हाईएस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन तक ले गए हम इसको। ब्रिजमोहन जी, आपका भी कोई इस पे एक व्यू पॉइंट है कि व्हेन वी लुक एट नंदन डेनिम टैपिंग इनटू दिस मार्केट अपॉर्चुनिटी? टेक्सटाइल के अंदर हमने काफी बड़ा काम किया। तो नंदन डेनिम काम शुरू किया तब हमारा यही विजन था। उस समय अरविंद और आरवी डेनिम दो ही इंडस्ट्री चल रही थी। तो हमने देखा भी इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है और आगे जाके डेनिम का फ्यूचर अच्छा है। तो हमने काफी एग्रेसिवली उसमें एक्सपांसन किया, एक्सपोर्ट भी, डोमेस्टिक भी। फिर टाइम से जाने के बाद हमको एक नई कंपनी और स्टार्ट की हमने, विशाल डेनिम के नाम से, विशाल फैब्रिक्स के नाम से, जो इससे थोड़े हटके प्रोडक्ट बनाए ताकि दो आइडेंटिटी मार्केट में जावे, ताकि कोई आदमी कंफ्यूज ना हो। तो वो हमने अलग से स्टार्ट कर दी, जो हमारा 6-7 साल से अच्छा प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है। और दोनों मिलकर आज के तारीख में हम अच्छा इंडिया को लीड कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी, लेट मी ब्रिंग यू इन। ये जो बैलेंस होता है, दो जनरेशन है प्रमोटर के, फैमिली बिजनेस में हमेशा एक चैलेंज के रूप में आया है। तो एक यूनिफाइड विजन एक फैमिली बिजनेस में कैसे डेवलप किया जाता है? जैसे हमारे अंदर हम चारों भाई हैं, इसके लिए हमने तो पर्सनली बातचीत करके बचपन से ही खड़े हुए, तो व्यूलेन, थिंकिंग, वेवलेन सब बिल्कुल बराबर मिलती थी, एक दूसरे के विचार मिलते थे। इसलिए हम एक तरफ से बढ़ते रहते थे, एक तरफ से थे हमारे, जैसे हम बोलते थे एक दूसरे से डिस्कस करते थे, हम इंडस्ट्री में बढ़ते गए जैसा कि हम सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी सेकंड जनरेशन आने लगी, बढ़ने लगे, और मैं जॉइंट फैमिली में बहुत विश्वास करता हूँ। इंडिविजुअल की जगह जॉइंट में हमारी रिस्क फैक्टर, कैपेसिटी बढ़ने की बहुत ज़्यादा पावर्स बढ़ जाती है। इसलिए हमने उसके ऊपर सोचना चालू किया कि अभी नई जनरेशन आती है उसके लिए। तो हमने शुरू किया कि अभी तक हर यूनिट के अंदर एक एक मेंबर ही चलाता था। अब मेरी आगे प्लानिंग है कि जितनी भी यूनिट है इसमें एक फर्स्ट जनरेशन का आदमी रहे और एक पर्सन रहे और एक सेकंड जनरेशन का उसके साथ में, दोनों साथ में चालू करें। जयप्रकाश जी, एनी कमेंट्स फ्रॉम यू बिफोर वी रैप थिंग्स अप विद द फर्स्ट जनरेशन ऑन द वे दैट इट इज गोइंग फॉरवर्ड? अभी जैसे हम लोग जो है जम्मू के अंदर प्लांट लगा रहे हैं, प्लास्टिक का प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें हम लगा रहे हैं आरपैट। आरपैट मतलब क्या है कि जो पानी की जितनी भी बोतल है प्लास्टिक की, उसको स्क्रैप को हम लोग लेंगे, लेकर के जो है उसको बोतल टू बोतल बनाएंगे। अभी तक ये जो बन रहा है बोतल टू फाइबर बन रहा है, लेकिन भारत सरकार ने अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इसको अलाउ किया है भाई ये खाने पीने के अंदर काम आएगा। इसके अंदर आप आरपैट मतलब स्क्रैप लो और उसको वॉशिंग कर करके सही तरीके से इसको जो है आप पेप्सी को, कोक को, बिस्लरी को या ब्ला 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 अलग ब्रांड्स को आप ये 20%, 15%, 25% आप उनको सप्लाई करो। तो ये पहला प्लांट अभी हम जम्मू में लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक ही हमारा प्लांट चालू हो जाएगा। ये हमारे लिए नया सेगमेंट है, नई चीज़ है, लेकिन बट हमने इसमें स्टार्ट किया। इसी ढंग से एक एल्यूमिनियम फॉइल है जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है। ये भी हमारे ग्रुप के अंदर हम पहली बार लगा रहे हैं। ऑलराइट, ज्योति प्रसाद जी, आपका कोई टिप्पणी ऑन दिस? ऑन बस यही है, अभी ग्रुप की यही इच्छा है धीरे धीरे बढ़ाते जावे। जैसे अभी सोलर में बढ़ा रहे हैं, आगे जाके हम स्टोरेज बैटरी का भी फ्यूचर आने वाला है, क्योंकि अभी रात को पावर में दिक्कत हो रही है, तो स्टोरेज दिन में कर लेवे तो रात को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी हम इथेनॉल के अंदर भी जा रहे हैं। आजकल गवर्नमेंट की डिमांड है, गवर्नमेंट ये चाहती है इथेनॉल का प्रोडक्शन इंडिया में आवे, और इथेनॉल को 20% पेट्रोल में गवर्नमेंट मिला रही है। इसमें गवर्नमेंट इज़ द बायर, OMC इज़ द बायर, गवर्नमेंट ही बायर है। उन्होंने हमारे साथ टाइप भी किया है, अभी 2 महीने में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। Well, we have been speaking with the first generation of leaders at the Chiripal Group to understand this incredible journey that has happened so far, and there's lots more in store. We'll take a short break, and when we return, we'll be speaking with the second generation of leaders who will bring in fresh perspectives and understand and help us understand how they're leveraging technology and bringing in new ideas to change the Chiripal Group for the better. Stay tuned. CNBC-TV18 presents The Genesis Gujarat. Welcome back to this special presentation. It's time now to speak to the second generation of leaders of this iconic group and understand
how they are taking this legacy of excellence forward and shaping many narratives, whether it's coming to sustainability, technology, or a global outlook. We have with us the second generation of leaders. Let me quickly introduce them to you, our viewers, starting with Vishal Chiripal, MD of SEIL. He is here with us, and along with him is Deepak Chiripal, CEO of Nandan Denim Limited. Also joining us is Ronak Chiripal, CEO of Nandan Terry Limited, and Vansh Chiripal, who's the CEO of Hexa Biochem. So we are going to have a wide-ranging discussion on the way forward for the Chiripal Group, because in the first segment, we understood how this legacy was built from the journey from Haryana to Ahmedabad and from Ahmedabad to across the world. All right, let's kick things off by understanding what's going on for the next generation. So Vishal, I'll bring you in broadly. What's the mission statement evolving to? And we look at the education space. That's an exciting space. It has also become a key focus for the group. So what are the growth prospects for SEIL? So the broad understanding of the mission and what's happening in the education space. What would you have to say? Yeah. So with a strong foundation of the legacy of the group, we think we'll have to change the way we move forward by sticking to our values, which has brought us here where we are today. If I talk specifically about education, I personally believe that going forward, we will be a 360-degree service provider in the life of a student. So whether it is a preschool student who is 5 year of old age, or an engineering student, or anybody who wants to do executive education in order to reskill themselves. So that is where as an education vertical of Chiripal Group, we should be present. And with the government's initiative of a national education policy, I think SEIL is poised at the right place to grow with our presence in preschool, with our presence in K-12 schools, a business MBA program, and teaching children life skills through our association with Franklin Covey organization. From that talking point, let's understand how the group is integrating technology across its different verticals. With so many divisions working, the idea is also how do you leverage technology to improve the output of those divisions. So Ronak, we'll start with you on your perspective, and Vansh, we'll get your perspective after that. So Ronak? So I think technology, of course, has become the most important thing to drive the growth for us. But I think going back one step, it's very important to align the the organization goals and digital transformation. We cannot just have a digital transformation without aligning it with the organization goals. So of course, most of our companies are driven by SAP. We have data captured at each level. Most of the decision making which happens on a day-to-day basis happens through data. We have got BI tools in order to kind of review the dashboards. Our review mechanism is pretty strong, and based on that review, we kind of take decisions. All right, Vansh, your thoughts on this, because especially as the company has ambitions to, they have already present in so many locations across the world. So the idea is also to leverage technology to improve your global scale. So what do you have to say about that? Yeah, so I think just to add on to what Ronak said, I think technology does play a very important role in optimizing the resources that we have. So as he said, we have had multiple initiatives being taken since day one. And fortunately, our entire family, all the 8 members who are actively involved, has been very open to change. So whenever there is any new technology that has been suggested by us or by the respective professionals, all of us are very open to exploring the opportunity. So one example that I would like to bring upon is the one that we use in procurement. So since vendor discovery and finding the best rate of the best quality of a particular product is so important, we have used e-bidding for procurement. So a very small use case, but something as small as that can make a big change in makes your value chain transparent. Exactly. Right? So there is a very transparent bidding process that happens that makes it very easy for the purchase team to make sure that they are finding new vendors at different intervals. That actually provides me with a nice segue as to what's happening with traditional businesses. Deepak, you have a point of view. I would like to add one more point here. Since we are talking about technology, I think technology is also enabling cultural change in the organization. So what is happening is our vision is also to ensure that decision making is
promoted, encouraged down the line, right? And empowerment also happens down the line. It right? trickles down. It trickles down. So technology is also enabling that. So it is not just about taking decisions, but it's also ensuring that everyone in the organization is involved in the decision-making process. And sees their productivity grow Yes. up, go up. So instead of top-down approach, I think the change that we envision is also that everybody takes ownership in the decision-making process and everybody ensures that the growth of the company is their responsibility. Absolutely. So technology is making that possible. Bringing back to the point of, say, traditional spheres of business, and that's where I want to bring in, say, Chiripal Polyfilms. When we look at packaging solutions, so still seen as a traditional industry. With this whole technological revolution taking place, what are its prospects and where do you see things going forward? So maybe we'll start with you and then Vishal, I'll bring in your viewpoint. So I think, see, polyfilms in general is a subsection of material science, and I think there is a lot of new applications that are coming up for packaging films or films in general. Be it flexible packaging or rigid packaging, we see a lot of growth prospects in that. And a few specialty applications, would be label applications. So there are a lot of new label applications that are coming up. A lot of new automotive applications that are coming into use these days. And with the government support of these manufacturing industries, automatically there is a proving ground for these specialty film applications to also come into play. I think. And also helps you have a niche in the business. Exactly. So while we have always been, more of a commodity business, we also want to move towards a more specialty segment. Obviously, it is important to give that due importance to commodity since that's the bread and butter. But with the right technology partners, with the right products in play, I think specialty or niche products can have a very big value add and can eventually drive the bottom line of the organization. Vishal, your thoughts on the growth prospects for Chiripal Polyfilms, what would you have to say? So as an organization at CPFL, we strongly believe that we have to put sustainability at the core of our operations. So in order to put our sustainability efforts in the right direction, we have invested in generating power through solar at CPFL and reducing our carbon footprint. At the same time, at CPFL, your flexible packaging business, we are recycling the plastic waste that is coming and then we are reusing it to generate flexible packaging films again rather than throwing it into the landfill. All right, let's look at another line of business. Home linen is seeing explosive growth. So, Chiripal Group has been a leading textile player since almost 50 years now. And while in 2014-15, we were exploring the industry where we should venture out into, and we realized that home textile is a part of textile which honestly we haven't, at that point group hadn't ventured out into. And we saw the potential of the industry. We saw the growth and the demand. Growth in the demand in the industry, and we realized it will be a good segment to kind of get into. So we wanted to get into home textiles. Started off with towel manufacturing. That gave birth to Nandan Denim back in 2016. Started off with around 1996 looms, and that was the first entry into a ready to sell kind of a segment for the group. So like denim we usually sell fabric. Yarn is again an intermediate product, but towel is something which is ready to use by the consumer. So in this home linen space, are we just starting at the point of a great story evolving? We have a long way to go as far as growth is concerned, as far as consumption. Till today, the largest producers of towel in India are focused on export market. Just imagine when India starts demanding, what kind of capacities we'll have to put in. Absolutely. So considering you're already exporting to 52 markets, the fact that India could drive the bulk of your growth is itself, the beginning of a great growth story coming in. Well, that's been the incredible story of the Chiripal Group, from its pioneering vision to commitment to innovation and sustainability. We've got a bird's eye view, an inside look as to how this growth story evolved from its humble origin to make the Chiripal Group a powerhouse, diversified conglomerate
in the annals of Indian business. And of course, we've had the opportunity to speak to leaders of the first generation and the second generation. Thank you so much for joining us. And I'm looking forward to more such stories coming out of Gujarat, the incubator of business here in India, and we look forward to that. Meanwhile, that's a wrap here on CNBC-TV18 presents the Genesis Gujarat in association with the Chiripal Group. I'm your host Gautam Srinivasan, and thank you to all our viewers for tuning in. See you next time. CNBC-TV18 presents the Genesis Gujarat